गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आज वॉइस क्लियर होगी। राइट, चलो। वॉइस आज लो तो नहीं आ रही है आप लोग को? अगर ऐसा कुछ है कैन टेल मी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो एज यू नो, कल आपका जो गेट इस बार आईआईटी रुड़की ने कराया था, एंड कल उसके आंसर की एंड यू कैन से द रिस्पॉन्स शीट हैज बीन रिलीज्ड। एंड आई थॉट कि उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं अब अगेन गेट के काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगेन इफ इट इज रिलेटेड टू गेट, दैट डजंट मीन कि आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करना है ना। बिकॉज क्वेश्चन इज द क्वेश्चन, राइट? तो साइकोलॉजी में अगर कोई एमसीक्यू बन रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड अगेन यू विल नो सम मोर थिंग्स अबाउट दैट कंसेप्ट। और कुछ अगर तुमने पढ़ा हुआ है तो उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा बूस्ट ही मिलेगा। तो देर इज नो हार्म कि हम ना सॉल्व करें, राइट? सो एज यू नो कि जितने भी 26 नंबर तक क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज फ्रॉम द जीए पार्ट, कैलकुलेशन, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, वहां तक आता है। फ्रॉम 27 टू क्वेश्चन नंबर 44 ये आपके साइकोलॉजी के एमसीक्यू शुरू होते हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, चलो शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग द बैच, माय एमसीक्यू विजेता बैच हैज बीन लाइव नाउ, एंड वो पर्सन ऑल्सो खत्म हो रहा है हमारा। And again, सारी recordings आपको available मिलेंगी. If you want to join, you can download the Study Capital app, and there you will see the section of Vijeta crash course, which has been now transformed into Parivartan batch. And आप उसको परचेज करके आराम से अपनी प्रिपरेशन विद एमसीक्यूज एंड रिसर्च मेथोलॉजी इन स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। So the first question is, parenting styles in which parents are so involved that children are permitted to behave without set limits is termed as। क्या होगा इसका आंसर? एनी आइडिया व्हाट कुड बी द आंसर? सो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें आपकी जो लिमिट्स हैं वो सेट नहीं है, बट द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट? सो दिस टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल इज एक्चुअली अ परमिसिव स्टाइल। ठीक है, लेकिन अब परमिसिव है, इसमें से भी कौन सी, नेग्लेक्टफुल और इंडल्जेंट? सो इट विल बी एक्चुअली इंडल्जेंट, राइट? क्यों उस तरह की इंडल्जेंट होगी? बिकॉज इंडल्जेंट एंड नेग्लेक्टफुल में सिर्फ यही डिफरेंस होता है। इन इंडल्जेंट पेरेंट्स आर इंडल्ज, इन्वॉल्व होते हैं, बट इन नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। सो देर इज जस्ट वन डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चल। Dash in both lobes of the brain are responsible for coordination and interpretation of information as well as higher mental processing. So this question was actually asked by my student जब भी पेपर हुआ था, उसे उन्होंने पूछा एसोसिएशन एरिया क्या होता है। सो आई सेड कि एग्जैक्टली ऐसे नाम का कुछ नहीं है। इफ यू कैन गिव मी द क्वेश्चन आई कैन हेल्प, है ना? तो ये क्वेश्चन आया, देन आई नो कि हाँ इसका आंसर एसोसिएशन एरिया है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द बोथ लोब्स ऑफ द ब्रेन। इट मीन्स दोनों लोब्स में ये चीज होती है, एंड इट इज द फंक्शन ऑफ एसोसिएटिंग द टू थिंग्स, है ना? तो उसमें आपका कॉर्पस कॉलोसम का भी इंपॉर्टेंट रोल आता है। सो दैट इज बेसिकली योर एसोसिएशन एरिया। क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, क्लियर। बाकी यू नो ब्रोकाज एरिया इज फॉर स्पीच प्रोडक्शन, वर्निक्स एरिया इज फॉर स्पीच कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पैराइटल लोब आपका यू नो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपका होता है इसमें। इफ स्किनर is equals to behaviorism, then Gardner equals to what? अगर स्किनर बिहेवियरिज्म का है तो गार्डनर के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर कुड हैव बीन कल्चरल साइकोलॉजिस्ट, बट वो प्योरली कल्चरल साइकोलॉजिस्ट नहीं था, ही वाज अ कॉग्निटिव प्लस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे हमें जो भी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, विल गो विद दैट ऑप्शन, दैट इज द कॉग्निटिव वन, है ना? सो ही गेव द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, right? So he gave the theory of multiple intelligence. It was Howard Gardner, है ना? उन्होंने कल्चर पार्ट पे फोकस किया था, बट he was more focused on the cognitive part. All right? चलिए, an experimental setup where neither the experiment nor the participant knows who are in the experimental or control group is known as। क्या होगा इसका आंसर? दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, है ना? ये आपके सीयूईटी के लिए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। It will be your double blind study। Clear? तो double blind study में neither the participant nor the what experimenter,
दोनों को ही नहीं पता होता है कि किसे कौन सा इंटरवेंशन मिल रहा है। दिस विल इंश्योर कि किसी भी तरह का कंफर्मेशन बायस, एक्सपेरिमेंटल बायस, सब्जेक्टिव बायस कुछ ना हो। योर एक्सपेरिमेंट कैन बी फ्री। क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर डी। If a culture congruence equals to social psychology, then evoked culture equals to what? तो अगर कल्चरल कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सोशल साइकोलॉजी, दे आर रिलेटेड, सो इवोक्ड कल्चर इसमें से किससे रिलेटेड होगा? एनी आइडिया? अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. करेक्ट. इट इज बेसिकली योर व्हाट? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी. क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट. दिस इज वेरी गुड. ऑप्शन नंबर ए है ना. किसी के पास आंसर की है तो प्लीज आंसर की से मत देख के बोलना, बिकॉज देयर इज वन क्वेश्चन रॉन्ग. सो आई डिस्कस इट. मेरे अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन का आंसर की गलत दिया हुआ है. सो आई एम अज्यूमिंग पीपल विल चैलेंज इट. तो होना चाहिए करेक्शन में, उसको सही करना चाहिए. ठीक है, देयर इज अ क्वेश्चन, तो विल डिस्कस इट. चलो, मैच द फॉलोइंग. I told you there is a trick for the match the following question. Just match 1 2 3 है ना. फिर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होता है. करेक्ट. सो आपको केवल दो तीन ऑप्शंस को मैच करना होता है. सो साइकोडायनेमिक को मैच करते हैं. व्हाट इज रिलेटेड टू साइकोडायनेमिक? कंट्रोल्ड बाय इनर फोर्सेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. ओके, सो ये आपका P3 हो गया. P3 आपका यहाँ पे है एंड P3 आपका यहाँ पे. ओके, विल गो विद वन मोर थिंग. बिहेवियरल reactors to the environment. This is the most possible thing. So Q का 1, search about Q का 1. Okay, we have Q1 and Q1. Two options match करेंगे. चलो एक और मैच कर लेते हैं. Humanistic. Humanistic का कौन सा हो सकता है? It is free agent seeking self actualization. R का 4. So R का 4 नहीं नहीं यहाँ पे. Right. So this is the right answer. Option number C. So match the following way. You don't have to match in like all the things. Just match option by option. If there are two or three similar options, at least third तो अलग ही हो, है ना. सब कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती. It will save your time. ठीक है, it is option number C. Clear? चलो, very good. Which statistical technique is used to analyze patterns of loading of coefficients? है ना. तो if you are my student, then you will know कि मैंने आपको एक introduce किया था concept about factor loading. So this technique is obviously related to factor analysis. Clear? This is related to factor analysis. So factor loading is nothing but the correlations of different variables on some dimensions in a very easiest and simplest manner. I'm not going to talk about communalities and horizontal component, h square, ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे. That's not technically the part of the syllabus. तो हम सिंपल रखेंगे कि लोडिंग कोफिशिएंट्स कहाँ भी आएगा, that will be related to factor analysis. ठीक है, simple. Then instinct. Match the following है. Again, let's talk of fixed action patterns. Okay, so P का 2. P का 2 हमारे पास कहाँ है? This one. Okay, P का 2 बिल्कुल भी नहीं है और कहीं. Okay, एक और मैच कर लेते हैं for the safer side. Self actualization. Okay, considered by Maslow as the highest level. Okay, R का 4. R का 4 है and I don't think so कि R का 4 और कहीं भी है. Right, R का 4 यहाँ पे है option number D, but it is not P3. It is P2. Instant क्या है? Fixed action pattern. So we'll go with option number B. Clear? You have to solve match the following like this only. इससे आपका टाइम बचेगा. Do not forget this thing. In CUET, you just have almost 1 minute to solve any question. आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम होता है. ठीक है, तो वहां पे टाइम पास नहीं करना है, क्विकली आंसर करना है चीजों को. हाँ, चलो. Alright. The tendency to observe behavior of others in ways that are according to your expectation about them is called. This is a very basic question, and the answer is what? Option number B or option number C? Confirmation bias or social judgment? Could be B or C. क्या हो सकता है इसका आंसर? ओके, B. 35 का B. What you say? Correct. It is confirmation bias. Many people can think कि ये तो social judgment का है. No, it is confirmation bias. Confirmation bias simply means that you will observe or you will see only those informations which will confirm your what expectations about something. This is confirmation bias. चलिए. The tendency to explain others' behavior as a result of personal factor is called. Very basic question. There are three terms. है ना? Fundamental attribution error, self-serving bias, and actor-observer effect. This is a very basic definition of fundamental attribution error. When you watch someone else's behavior and attribute it to their what?
internal dispositions, है ना? It is option number A. सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना. सेल्फ सर्विंग बायस इज बेसिकली इफ समथिंग गुड हैपेंस टू यू इट इज बिकॉज ऑफ यू, है ना? इफ समथिंग बैड हैपेंस टू यू इट इज बिकॉज ऑफ अदर्स. दिस इज सेल्फ सर्विंग बायस. क्लियर? एक्टर ऑब्जर्वर बायस, in a way you can say something bad happens to you it is because of the people of the world, and if something bad happens to some other person you will say no it is because his fault, है ना? तो ये एक्टर ऑब्जर्वर बायस होता है. कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा बट दे आर इंपॉर्टेंट, आपको इसको प्रिपेयर करके आना चाहिए. ओके. अंकित was chased by a dog when he was a child. Now he is afraid of all animals. This is an example of. क्या होगा इसका आंसर? बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर? Stimulus generalization. Am I right? Am I right? Basic definition of stimulus generalization. He was fearing dog, है ना? अब वो सारे ही जानवरों से डरता है. He fears every animal or all the animals. This is stimulus generalization. Basic question. Clear? Okay. Alright, you have to identify which is true and which is false. Little bit tricky because these types of patterns are not asked in CVT. So don't worry, these types of question will be not asked in your CVT examination. But the term here, है ना? Exogenous attention, endogenous attention, this they might ask, है ना? The question is saying कि इसमें से false कौन है, true कौन है? Little children wearing neon green color jacket on the field trips illustrates use of exogenous attention. Just remember, very easy. Exogenous attention is involuntary. Endogenous attention is voluntary. If you know these things, आप आंसर कर लोगे. So option number P सही हो जाएगा. Q is also correct. Scanning the room for green color. You are voluntarily searching for the green color. It is endogenous attention. ऊपर वाला exogenous attention का example है. Endogenous attention is voluntary. Correct. Exogenous attention is involuntary. Correct. Clear? Endogenous attention is bottom process. No, it is a top-down process. Endogenous attention is voluntary. It is based on your experiences, memory. It is top-down. On the other hand, what exogenous is bottom-up. Clear? So S गलत है. So P, Q, R are correct. P true, R true, and P true, Q true, R true, S false. Option number C. Clear? Option number C is the right answer. Okay. Specific descriptions of variables that allow it to be measured is called. Very important term. And I think day before yesterday, I was teaching this concept in my Vijeta class. I hope जो अभी live देख रहे होंगे, please गलत मत करना इसको, ठीक है? बेइज्जती मत कराना. क्या होगा इसका आंसर? Correct. It is operationalization, है ना? I was telling you about the operational definition. एक MCQ हम लोग solve कर रहे थे. Because whenever you do any kind of research, there is a sole responsibility of the researcher that whatever variable he is using, whatever construct he is using, it is his responsibility that he should define it so that if some other person is trying to, understand his research, he should be able to maintain the relations of the variables. He should understand what you actually mean by this variable. This is operationalization. Clear? It is option number C. In which methods or method MSQ है. In CUET there is no MSQ. सब MCQ होता है. But again topic तो topic है, right? In which methods we gather detailed information of small number of person. Basic question. It will be what? Your depth interviews and case study. केस स्टडी एंड डेप्थ इंटरव्यू में दोनों ही में हम लोग बहुत डिटेल्ड आंसर्स लेते हैं, है ना? एंड ये दोनों ही आपके क्या हैं? व्हाट इज दिस? क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन. कोरिलेशन सर्वेस दे आर क्वांटिटेटिव डिजाइन. क्लियर? ओके. Which of the following options does not denote the state of internal physiological equilibrium that body strives to maintain? कौन मेंटेन करता है? पहले तो ये बताओ. Which brain part maintains this? It is hypothalamus, है ना? So आंसर क्या होगा इसका? Equilibrium between outside and inside, or equilibrium about the physiological conditions inside the body, that is homeostasis. So question क्या पूछा है? Which is not. आंसर क्या हो जाएगा? A, C and D. These things do not talk about the equilibrium. Only homeostasis talk about the equilibrium. Clear?
चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रेफर टू द सेकेंडरी अप्रेजल? सेकेंडरी अप्रेजल का ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, बताओ। थॉट्स अबाउट व्हाट टू डू इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कुड बी, ठीक है, ये हो सकता है। थॉट्स अबाउट वेदर एन इवेंट इज जनरली थ्रेटनिंग, ये तो प्राइमरी अप्रेजल होता है ना। इवैल्यूएशन ऑफ एन इवेंट्स रेलेवेंस थ्रेट स्ट्रेसफुलनेस, ये भी आपका क्या होता है, प्राइमरी अप्रेजल। इवैल्यूएशन ऑफ कोपिंग रिसोर्सेज एंड ऑप्शंस फॉर डीलिंग विद स्ट्रेसफुल इवेंट, हाँ ये हो सकता है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड डी। बट क्वेश्चन नंबर 42 में आंसर की में क्या दे रखा है, सी एंड डी, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर, तो मेरे अकॉर्डिंग ये की में गलत आंसर दिया हुआ है। दिस इज अ वेरी हाई चांस दैट की विल बी मॉडिफाइड, बिकॉज ये तो अभी टेंटेटिव प्रोविजनल आंसर की जाएंगे, राइट। सो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए एंड डी होना चाहिए। क्लियर, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग, एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। तुम्हें भी लग रहा है ए एंड डी होना चाहिए, बिकॉज दीज टू थिंग्स टॉक अबाउट सेकेंडरी अप्रेजल, है ना। व्हाट यू गोना डू इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, क्या करोगे, कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, दिस इज सेकेंडरी अप्रेजल, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, ए और डी होना चाहिए करेक्ट आंसर का? टेल मी इन द कमेंट्स, क्या लगता है आप लोगों को? And if like someone has given the gate, I think you should like clear it, है ना, आप लोग को इसको करना चाहिए क्लेम। क्लियर, सो इट इज बेसिकली ए एंड डी। की में क्या दे रखा है, सी एंड डी, है ना। मैं क्रॉस चेक कर लूं 42 का, सी एंड डी, राइट, इट इज सी एंड डी, बट इट इज नॉट, इट इज ए एंड डी। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is are included as a basic type of intelligence in Sternberg triarchy theory? So simple question, है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायर्किक थ्योरी एनालिटिकल होती है, और कौन सी होती है, क्रिएटिव होती है, और कौन सी होती है, प्रैक्टिकल, बट दैट्स नॉट गिवन इन द ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। एज पर द एथिकल गाइडलाइंस ऑफ APA, which of the following options is unacceptable use of deception? So deception basically means that when you hide some information from your participants due to the sake of experimental confidentiality, but afterwards आपको उसको डीब्रीफ करना पड़ता है। अगेन ये हम लोग कल की क्लास में अपने डिस्कस कर रहे थे, कल मीन्स सैटरडे की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, राइट। क्या होगा इसका आंसर, फॉल्सिफाइंग डेटा, नहीं, दिस इज रॉन्ग, अनएक्सेप्टेबल है। टेम्पररी विदहोल्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, करेक्ट है, राइट। नॉट टेकिंग इन्फॉर्म कंसेंट, रॉन्ग। यूज ऑफ कॉन्फिडेंस, ये करेक्ट है, कर सकते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ए एंड सी, नॉट एक्सेप्टेबल पूछा है ना, सो ए एंड सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट। ओके, अगेन किस डोमेन से क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से। अब अगेन ये थ्योरी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, डोंट वरी, यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस विद द कॉमन सेंस। इफ यू कैन रीड द ऑप्शंस एंड द मैचिंग ऑप्शंस, you can guess what is the correct answer. Wear and tear theory, क्या लगता है, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग। बॉडी ऑर्गन्स एंड सेल टिश्यूज wear out with the repeated use, कुछ नहीं पता है तो wear दोनों में वर्ड है ना, ब्लाइंडलेस भी ले सकते हो, इट इज Q4, है ना। लेट्स सी Q4 कहाँ आता है, इज देयर एनी Q4, Q का 4, Q4 we have two Q4s, right, this and this. Okay, let's match in a free radical theory, oxygen molecule with unstable electron, R का फर्स्ट है ना, radical theory you know, radical oxygen, right. Okay, so क्या होगा इसका आंसर, R का 1, R1 R1, okay we have two R1s, गेट अच्छे क्वेश्चंस देता है। जनरली सीवीटी में इस तरह नहीं होता है, सीवीटी इफ वन इज मैचिंग एवरी अदर ऑप्शन विल आल्सो मैच, है ना, वो मेहनत नहीं करते इतनी। एक्टिविटी थ्योरी, एल्डरली पर्सन्स हु रिमेन एक्टिव इन सम वेज आर एवर, तो सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है। एस का 3 नो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 डी में एस का 2 दिख रहा है, इट्स रॉन्ग, इट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द न्यूरोट्रांसमीटर विद देयर फंक्शंस, अच्छा क्वेश्चन। Acetylcholine, basic question. I've been telling this 100 times in my class. Attention and memory. Acetylcholine, है ना? Correct? Okay. Dopamine, movement and pleasure. We can say serotonin का, norepinephrine का. Confusion हो सकता है, right? Let's go with the options, है ना? Because we have everywhere read that serotonin is for arousal and mood, and norepinephrine is for sleep, anxiety, and everything else, right? We have technically studied these things only. बट यू नो कि मूड के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं,
So let's check the options curiously, है ना? P का 3, P3, okay, we have here, ठीक है? Q का 1, we have Q1, okay, anywhere else? No. So R का 2, R का 2. So here serotonin is matched with sleep, anxiety, appetite. No issues. हमें ये थोड़ी लड़ना है कि सर हमने बुक में क्या पढ़ा था. We just want कि हमारा आंसर सही होना चाहिए. So if two things are matching, we won't care कि हाँ बाकी चीजें मैच कर रही कि नहीं कर रही हैं. We'll go with what is the most suitable thing. So in this situation, the correct answer is what? It is basically option number 2. Clear? चलो. हेलो हेलो एवरीवन, हेलो. काफी लेट ज्वाइन किया आप लोग, अब हेलो बोल रहे हो. चलो. अगेन मैच द फॉलोइंग. गेट मैच द फॉलोइंग से बहुत ऑप्शन रहता है ना. अगेन मैच द फॉलोइंग इज लाइक सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू. बहुत सारे ट्रिक्स ऑप्शंस होते हैं. ओके, सिंपैथेटिक, यू नो, सिंपैथेटिक इज फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, है ना. इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए. पीक ऑफ 4, पीक ऑफ 4, हियर वी हैव पीक ऑफ 4, पीक ऑफ 4. ओके, वी हैव 3. ओके, afferent, चलो इसको देख लेते हैं. कैरिंग मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स, दिस इज efferent. एग्जिट हो रहा है. afferent का क्या होगा? एस का 1, एस का 1, here we have एस का 1. okay, we don't have s1. let's check one more. afferent का देख लेते हैं. कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम सेंसस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना. सेंसरी से ब्रेन की तरफ ला रहा है. आर का 2, आर का 2, we don't have आर का 2. so option number A is the right answer. Clear? Match the following बहुत ज्यादा इजी होता है if you know the trick. Trick is do not match everything. Go with the most number of matchings. हमेशा क्लियर रहेगा ये चीज. This is a very good question. A researcher plans a study to study the long-term effect of COVID-19 on human cognitive functions. तो उसने स्टडी बन किया 2022 में. ग्रुप ए में 10 ईयर के लोग थे, ग्रुप बी 20 ईयर ओल्ड, ग्रुप सी 30 ईयर ओल्ड, राइट. फिर सेकेंड टाइम उन्होंने डेटा लिया इन 2025. नाउ ग्रुप डी वॉज 13 ईयर, ग्रुप ई वॉज 23 ईयर एंड ग्रुप एफ वॉज 33 ईयर. बेसिकली 3 साल का एडिशन हो गया, है ना. व्हाट डू यू थिंक? यू कैन नोटिस यहाँ पे वी हैव डिफरेंट ईयर ऑफ पीपल, है ना. डिफरेंट एज ऑफ पीपल वी हैव राइट नाउ. अंडरस्टूड? And this is a long-term effect study. So we can say we have cross-sectional and we have longitudinal. So it is a mix basically. So it will be cross-sequential design or sequential design. दोनों का mix form है. It is not longitudinal. It is not if it's longitudinal. Longitudinal होता अगर तो age groups similar होते, same होते. We have 3 different people of group, है ना. We have 3 again different groups of people, right? It is sequential. Basic definition of sequential. ठीक है, चलो. If CNS equals to brain plus spinal cord, PNS equals to what, है ना. Basic question है, theory basis पे. So इतना easy questions आता है. Clear? It is just about the revision and how much you solve MCQs, right? So again MCQ को बहुत please बहुत ज्यादा importance दो, like they are the key. जितना ज्यादा MCQ practice करोगे, you will get the benefit. It is what? Somatic and autonomic nervous system. Autonomic nervous system again divided into 2 parts, sympathetic and parasympathetic. Option number C is right answer. Clear? Yeah. Last question. Tomorrow again we'll continue with the remaining questions of the gate and we'll take some more questions and I'll tell you some more tricks and tricks and थोड़ा बहुत concepts को भी कल हम लोग वापस से clear करेंगे, ठीक है? Okay. Anima, an archetype representing the female principles. Okay. P का 3 we have P का 3. Okay. Animus, an archetype representing male principles. Q4, we have Q4, we have the Q4. Self archetype, an unconscious image representing unity, wholesome completion. Self है, R का 2, बाकी मैच करो भी नहीं, S का 1 है बेसिकली, राइट. ऑप्शन नंबर C. सर हिंदी मीडियम में भी क्लास मिल सकती है क्या? सर जी मिल तो सकती है बच्चे, पर प्रॉब्लम ये ना कि हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना. जैसे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को मैं रखता हूँ. ये गेट के क्वेश्चंस में हिंदी मीडियम का पेपर लैंग्वेज अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं इंग्लिश में चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. आप मेरे बाकी के लेक्चर्स देखेंगे एमसीक्यू वाले, वहां पे दोनों लैंग्वेजेस में
लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं दोनों लैंग्वेज में, क्वेश्चन और आंसर्स को भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलो चलो एक सॉल्व करते देख गया, तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स एम दैट एक्सटेंशन ऑफ एन अनडिजायरेबल बिहेवियर टिपिकली मेक यूज ऑफ। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। अगर हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और हमें एक्सटेंशन मेन हमारा है कि जो भी अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको एक्सटेंड कर दे, एंड वी नीड टू मॉडिफाई बिहेवियर, द बेस्ट थिंग इज जनरली व्हाट वी डू इज ऑप्शन नंबर डी, नॉन रीइंफोर्समेंट एंड टाइम आउट। कैसे, आई विल गिव एन एग्जांपल। इफ योर चाइल्ड इज थ्रोइंग टेम्पर टैंट्रम्स, है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, कहीं मॉल में गया, रोने लगा, लोटने लगा रोड पे, राइट, कि मुझे टॉय दिला दो। जनरली पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पनिशमेंट नहीं देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते, है ना, गिरते रहो, रोते रहो, दे इग्नोर इट लाइक अ स्वीट पोल, है ना, इग्नोर करते हैं। दैट इज नो रीइंफोर्समेंट एंड टाइम आउट, इग्नोर ही कर देते हैं पूरा पूरा, करेक्ट। So that is your non-reinforcement and timeout. Could be true. कहीं कहीं पे punishment shaping हो सकता है, stimulus control timeout हो सकता है, but it is non-reinforcement. किसी भी तरह के उस undesirable behavior को तुम reinforce नहीं करोगे at any cost. And again, you will see or you will wait till the time that behavior is automatically distinguished, है ना, अपने आप ही खत्म हो जाता है behavior. This is option number D. Clear? कल again हम लोग मिलेंगे at the same time and we'll continue with the questions and we'll tell you lots of new things. Okay. GATE and CBT PG. क्लियर। अगेन माय विजेता एमसीक्यू बैच इज लाइव राइट नाउ, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, चल मैं ऑलमोस्ट दोनों ही लैंग्वेज हमेशा यूज करता हूँ, मेरी आदत है, राइट। सो यू कैन ज्वाइन द बैच एंड यू कैन डाउनलोड द स्टडी कैपिटल ऐप, देयर यू विल सी द सेक्शन ऑफ सीबीटी पीजी क्रैश कोर्स एंड परिवर्तन क्रैश कोर्स का भी सेक्शन बना हुआ है। एनीवे यू कैन बाय द कोर्स एट 999 एंड इट इज जस्ट 27 डेज, है ना, तो बहुत कम दिन बचे हैं, 27 डेज में भी शादी बारात आएंगी, है ना, कुछ दिन बीमार भी पड़ो, होप सो ऐसा ना हो, बट चांसेस इतने मौसम ऐसे हो रहा है। अगेन प्लीज डू नॉट टेक एनी रिस्क, एमसीक्यू सॉल्व करते रहो, रिविजन करते रहो। अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, दिस इज नॉट अ टाइम कि किसी बुक को खत्म करो, राइट। डू नॉट गो फॉर एनी स्टैंडर्ड बुक्स कि अभी कभी बुक पढ़ा नहीं था अब पढ़ना शुरू करते, नो, इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स द टाइम फॉर ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड रिविजन थ्रू द एमसीक्यू, बिकॉज इवेंचुअली आपके एग्जाम में आपको पेजेस नहीं भरने हैं, राइट, थ्योरी पार्ट नहीं आने वाला है, एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो प्रैक्टिस विद द एमसीक्यूज। क्लियर, सी यू सून टुमारो एट द सेम टाइम, ऑल द बेस्ट।